Good morning, students. Hope you will find at your respective places. In continuation to our this topic, genetics, we were studying the Mendelism. Today, we will start this. We will discuss what we call as the different crosses, mainly the monohybrid cross. What we mean the dihybrid cross. What we mean by trihybrid cross, and we will try to what extract the phenotypic ratio as well as the genotypic ratio from the different crosses. After going through these different crosses, I will also give you a short formula how we can determine, how we can calculate without doing these orthodox, without doing this long what we call the Punnett square or this long description of calculating this ratio. I will give a simple formula how to calculate the mono this what is genotypic ratio as well as the phenotypic ratio of these three different crosses. Let us first, what we will see, we will start this monohybrid cross. Monohybrid cross. What do you mean by the monohybrid cross? It is that type of cross where we will see जो Mendel जो था, he has taken into consideration only one pair of contrasting character. When he was working on his experiment, he has only in this cross he has taken into consideration only one pair of contrasting character. So parents, अगर हम लेंगे one parent, it is homozygous tall, pure line. जो मेंडल ने जो भी क्रॉस किया है, he has taken into the pure line and dwarf. This is the pure line, that is the homozygous. It is also the homozygous. We have not to take this heterozygous. Gametes T T. Here gametes again small t and small t. Now when we show the crosses of this, what will be the ratios? Those ratios I will show you by this color, green color. जब मैंने इन दो को क्रॉस किया, that is the first filial generation, TT and TT. Now this and this cross, this and this cross. What we will get these hybrids, TT and TT. So this is the F1 generation, या hybrid first filial generation. यहाँ पर अगर हम ये देखेंगे phenotypic ratio or what is called as the phenotypic ratio, that is all of them are tall because this T is dominant, this T is dominant, this T is dominant, this tall is dominant, that it is 4:0. And जो हम यहाँ पर देखेंगे गिमेटोफिटिक रेशियो, गिमीट जो है, they are all heterozygous. Heterozygous tall, again it is 4:0. Now when these hybrids of these F1 generation are cross pollinated, चलो कर लो cross pollinated, this TT cross TT heterozygous, here gametes will be TT. Using the Punnett square, जब हम Punnett square इस्तेमाल करते हैं, now see cross. Now here we will draw the gametes of first parent T and T, here of the second parent T and T. Now make the cross. T T, it is capital T, T and this small t, T capital small t, this and this capital T small t, and this T T. Now this is tall, this is tall, this is tall, this is tall. So
हमारा जो phenotypic ratio, it comes equal to, it is tall because this T is dominant, this is tall, it is a heterozygous tall. What will it becomes? 3:1. That is 3 tall and 1 dwarf. Now, when we go to the genotypic ratio here, what we will see, this is the homozygous tall. I will write it here. Homozygous tall. It is heterozygous tall. It is heterozygous tall and it is recessive tall. So, homozygous tall वाले कितने हैं? एक. वेरी गुड. हेटेरोजाइगस टॉल वाले कितने हैं? एक और एक कितने हो गए? दो. एंड दिस रिसेसिव टॉल वो वाले कितने हैं? 1. दिस इज द फर्स्ट रेशियो विच कम्स 1:2:1. एंड दिस क्रॉस, अगर आपको याद होगा, इट इज एप्लीकेबल टू दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. या वी विल सी जो प्योरिटी ऑफ द गमीट जो है वो यहाँ पर हमको अच्छी तरह से डिस्क्राइब हो जाता है. नाउ ये रेशो हम याद रखेंगे. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, phenotypic ratio 3:1. Genotypic ratio it is 1:2:1. ये याद रखना बेटा. Now let us come to the second cross. Now we have got second cross, that is called as a dihybrid cross. What do we mean by the dihybrid cross here? We are taking जो cross हम करते हैं, जहाँ पर जो parent जो हम use करते हैं for the cross, they have got two different contrasting characters. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या लेते थे? जहां पर पेरेंट के पास सिर्फ हम क्रॉस लेते थे, एक ही कैरेक्टर हम लेते थे. चलो, मेंडल ने जो भी काम किया, he has taken pure line. This is tall and this A. What this A? This is the tall. This is the जो flowers है, they are axile. They are पुशन जो इनकी है, या we will take purple color के flowers. चलो, it is crossed with dwarf plant and white flowers. मनलीफ ने इस क्रॉस में, these are the parents. Now अगर हम gametes देखेंगे, what we will get the gametes. gametes जो हमारे पास आ जाएंगे, what we will get the gametes. You will find the gametes. Now the gametes जो हम देखते हैं कि they segregate. Simply what we will see, and when we cross them we get the, जो हमारे पास जो क्रॉस आता है, how we will get those what we call as what I have written. This is the parents. Now let us first see what will be the gametes. Sorry. Now let us see the gametes. गमीट जो यहाँ पर होंगे, that will be TP, and यहाँ पर जो गमीट्स होंगे, they will be small t. This. Now when they cross with each other, what we will get, जो हमारे पास जो पहला जो होगा, these are the gametes. इसके बल्ले एक, इसके बल्ले एक, इसके बल्ले एक, इसके बल्ले. Now when we will cross them, what we will got the F1 generation जो हमारे पास होगी, F1 generation, that will be
T, small t, capital P, small p. This will be our F1 generation. When the hybrids of this F1 generation are crossed together, चलो पहले हम पुनीत स्क्वायर बनाएंगे. Now हमारे पास जो अब क्रॉस है, it is between this and this, T, capital P and small p. अब क्रॉस जो हमारे पास है, what will be the our parent, जो हमारे पास parent जो होंगे, हाँ, अब जो गेमीट्स होंगे, this capital T, small p, capital T, capital P, capital T, small p. Now with the small t, capital P, small t, small p. Same यही रेशो TP, this TP यहाँ पर this and this हो गया ये, this and this हो गया ये. Now this डॉर्फ से this and this हो गया ये, and this and this. Now try to write the ratio. इन दो को मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल P, कैपिटल P. व्हाट विल फाउंड? कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल P, स्मॉल p. चलो ये क्या आ जाएगा? कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल P, कैपिटल P. इन दो को मल्टीप्लाई करके कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल P, स्मॉल p. ये दो कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल T, स्मॉल p, स्मॉल p, कैपिटल T, स्मॉल p, कैपिटल P, स्मॉल p, कैपिटल T, स्मॉल p, स्मॉल p, स्मॉल p. चलो इन दो को मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस कैपिटल T, देन स्मॉल t, देन कैपिटल P, और यहाँ से भी कैपिटल P. चलो इन दो को मल्टीप्लाई कर लो, कैपिटल T, this is small t, then small p, sorry, capital P and small p. Then this small t, capital P and capital P. इन दो को मल्टीप्लाई कर लो, कैपिटल T, small capital P and small p. इन दो को कैपिटल T, कैपिटल P, small p. Now इन दो को मल्टीप्लाई करके कैपिटल T, स्मॉल p, स्मॉल p. इन दो को T, कैपिटल P, स्मॉल p, स्मॉल t, स्मॉल p एंड स्मॉल. नाउ अब हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं. अब हम रेशो देखेंगे. व्हाट दिस विल बी? इट विल बी द लॉन्ग, इट विल बी, सॉरी, अब हम रेशो देखेंगे. एक मिनट. दिस इज टॉल एंड पर्पल. चलो टॉल एंड पर्पल रेशो हमारा क्या है, कितने हैं? टॉल एंड पर्पल. दिस विल बी टॉल एंड पर्पल, दिस विल बी टॉल एंड पर्पल, this will be tall and purple, this will be tall and purple, this will be tall and purple. ये नहीं होगा. this will be tall and purple, this will be tall and purple, this will be tall and purple, and this will be tall and purple. कितने आ गए? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. these are 9. चलो अब tall and white. टॉल एंड वाइट कितने आ जाएंगे? 1 2, ये नहीं, दिस 3. नाउ कितने आ गए? ये 3. अब वी हैव गॉट
this dwarf and purple, dwarf कितने हैं and purple. This is 1, this is 2, this is 3, that is 3, and last is dwarf and white. वो कितने हमारे पास है? They are total 1. नाउ अब जो यहाँ पर हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो जो आता है दैट इज 9:3:3:3:1, लेकिन जीनोटाइप रेशियो जो है वो मैं फिर आगे बताऊंगा आपको वो क्या निकलेगा. नाउ जो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो जो है दैट बिकम 9:3:3:1. अगर हम यहाँ पर देखेंगे फिनोटिपिक रेशियो इट इज 3:1 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. यहाँ पर हमने देखा जीनोटिपिक रेशियो इट बिकम्स इक्वल टू 1:2:1. यहाँ पर में हम आगे बताएंगे कि वो कितना निकलेगा. सो व्हाट वी हैव डन देयर दैट इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. आई हैव टेकन दिस टॉल एंड पर्पल. टॉल हाइट और मैंने कलर ऑफ दीज फ्लावर्स ले, और जो वहां पर हमारे को इमेजेस बन गए दे बिकम दिस is the dominant, this is the dominant, this touch recessive, this is recessive. When they are cross, what we get? P, T, P, P, and these are the two parents. When these hybrids are cross-pollinated, yeah, self-pollinated with each other, using this Punnett scale, I get the ratio like this. They are 9:3:3:1. Now, in the next video, I will show you the tri-hybrid cross, and that is this long, this explanation, and also the short form how we can calculate. That will be of somewhat useful. वहाँ पर इतना लंबा खींचा हमको multiplication नहीं करना है. वहाँ पर as a simple you can calculate the phenotypic ratio and genotypic ratio or three different crosses. That is the monohybrid, dihybrid, as well as the trihybrid cross. That is all for today. Stay blessed. God bless you. Thanks.